एज अ ट्रांस काम करूँगी तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा करूँगी और उनके जेंडर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूँगी। Hi everyone, this is Sailesh Ram, AsianCultureVulture.com. We're here at the Cannes Film Festival 2022 and we're talking about the film Joyland, which had its world premiere here in the Uncertain Regards section. I'm joined by Alina Khan, who plays Biba, and Simon Sadiq, who's going to translate for us. Alina, welcome to AsianCultureVulture.com. How are you doing? जी, आई एम गुड, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं कान फिल्म फेस्टिवल में आई। मेरी ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतने सीनियर पर्सन से मैं उनके साथ काम किया और मेरे साथ इतने सीनियर पर्सन थे और इतनी अच्छी क्लैप हुई हमारे जॉयलैंड मूवी में। सो आई एम सो हैप्पी। She's very excited. It's her first time at Cannes. She's very excited about that. Just joined by the whole team, which so many experienced actors with her, and she's with them. And she was very overwhelmed and happy about the standing ovations, particularly. So tell us a little bit about Biba, the character, and how you got into the role. जी, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि बीबा जो थी वो मेरी रियल लाइफ से थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि बीबा और मेरे में चेंजिंग ये थी कि बीबा जो थी वो थोड़ी सी गुस्से वाली थी और उसे ना नहीं थी पसंद, क्योंकि जैसे आपने देखा मूवी में वो डायरेक्टर कट आउट की बात होती है तो वो कहता है कि मैं पैसे नहीं पे कर सकता, तो फिर बीबा जो है वो फंक्शन पे जाती है और फिर पैसे कमाती है और फिर कट आउट बनवाती है। तो वो उसकी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजिंग थी लाइफ में, रियल में। दूसरा ये कि जैसे गुरुजी का कल्चर था हमारे घर का, बीबा के हाउस का, उनकी जो बाकी ट्रांस कम्युनिटी थी वो प्रोटेस्ट वगैरह पे जाती थी, पर बीबा ये चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं रखती थी। उसे था कि मैंने माशरे में कुछ करके दिखाना है, ना ही कि प्रोटेस्ट से और इधर उधर की चीज़ों से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूँगी, मुझे अपने आप को बताने के लिए कुछ बेहतर करना पड़ेगा। तो वो काफ़ी स्ट्रगल उसमें थी बीबा की। बाकी कुछ चीज़ सेम थी, वो ये थी कि मैं अपनी रियल लाइफ में फॉर एग्जांपल अलीना और बीबा में सेम ये था कि हम दोनों अपने काम से बड़ा वो करते हैं, बहुत मेहनती हैं। So she was a bit difficult for her because she's very different from Biba in many ways. Biba is angrier, she's more aggressive, she takes control in a very different way than Alina does, and so she had to like there were examples like with the whole cutout that she's just a go-getter in a far more aggressive way, which is not how she operates in her real life, Alina. And another big difference was the fact that Biba is very apolitical in that sense that she doesn't want to go to the protests. Her way of making space in the society is very individualistic, that she just wants to do work and wants to prove her own self, and she doesn't want to sort of raise a hue and cry through protests about about overall trans issues. So that was different from her, but the similarity was that they're both very ambitious and they're both very sincere and hardworking towards their work, which is something that she related to in her character. Yeah. So you really had to act in this film. It wasn't something that came kind of naturally, and it must have been very daunting to be in your first feature film. जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी पर्सनली तौर पे, क्योंकि बीबा का कैरेक्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे से, पर ये था कि हमारी वर्कशॉप हुई, उसमें साइम जी बाकी जो टीम मेंबर थे उन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया और मैंने बहुत दिमाग से काम किया। मैं स्क्रिप्ट को पढ़ती थी और मैं सोचती थी कि साइम जी ने जो लाइन लिखी है इस लाइन का कोई मकसद है और उस चीज़ को, उस फीलिंग को ज़ाहिर करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाकी उस तरह से मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं अपना ही करैक्टर कर रही थी, बस ये था कि मैं ज़रा बीबा की चीज़ों को फॉलो कर रही थी, क्योंकि मैं ट्रांस थी तो मुझे इतना वो एक्टिंग करके वो दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम अपनी रियल लाइफ में उस तरह से फेस करते आ रहे हैं। सो इसलिए मेरे लिए आसान था क्योंकि सब लोगों का साथ था और मैंने वर्कशॉप की और मेहनत की और So it was a bit daunting for her initially, but we did some workshops before, like a couple of months before the shooting, which really helped her. And then she would read the script over and over and over, and she would try to understand the meaning or the reason behind every line that was written and every move that was there, which really helped her. So it wasn't, and of course, because she is trans and she's playing a trans character, of course she didn't have to act that part out the way other actors have to when they're playing a trans character. But yeah, the characteristics were very different between Biba and her, which the workshops and just like working on the script helped her a lot doing that. And do you feel this the transgender issue? Do you feel that very personally? As I mean, not just in South Asia, but also globally, it's become a big issue. Do you feel like you're at the vanguard or representative of that through the film?
जी वैसे मेरी पर्सनल तौर पे अगर देखा जाए तो ट्रांस कम्युनिटी को काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर से फैमिली सपोर्ट नहीं होती, मुआशरा जो है वो उस तरह से उसे इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। फिर अगर तलीम का बड़ा इशू होता है, जो पढ़ी लिखी ट्रांस होती हैं वो पढ़ तो लेती हैं पर उन्हें उस तरह से कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह से अपॉर्चुनिटियाँ नहीं हैं। क्योंकि 2018 में बिल पास हुआ हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए, पर अभी तक उसमें स्टिल काम होता जा रहा है। पर उस तरह से एक्सेप्टनेस अभी नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बेहतर होगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने अभी हमारे लिए जॉब्स की ऑफ़र की है कि 0.5% कोटा निकला हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए। इज़ अ बिग हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बट ये बहुत थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी सी मकदार है। बाकी देखिए आने वाले वक्त में शायद ये मज़ीद हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लिए आसानी पैदा हो। जिस तरह मैं आगे आई हूँ, मेरी ट्रांस कम्युनिटी पाकिस्तान की कुछ और ट्रांस बंदियाँ हैं जो जो काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हमारे लिए जो हमारी न्यू यूथ ट्रांस कम्युनिटी है उनके लिए बहुत अच्छा वो होगा और उनके लिए रास्ते खुलेंगे मज़ीद। Yeah, she does. She personally does care a lot about raising awareness about certain issues because there's not acceptance for trans people who from their families in spaces of education. Even if they do get education, jobs are very limited in that sense. So it is tough. But again, there was a bill passed in 2018, which is a good thing. But there's again work to be done for it to be implemented. And she's hopeful because there are people like her, there are other people, there are certain other trans figures who have come up in other fields and are making a name in the past couple of years. So there is a silver lining to that there is some progress that's being made. So she is hopeful. Yeah. And are you very set now on an acting career? Is this going to be going forward? Are you going to be looking for more roles and we're going to be seeing you on the big screen a lot more? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मैं एज़ अ एक्टर काम करूँ, क्योंकि उस तरह से तो अभी नहीं कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम कुछ सोचें। बाकी मैं बहुत खुश हूँ कि साइमदीन ने मौका दिया मुझे और मेरे पे एतबार किया और मैंने उस पे बहुत मेहनत से काम किया, और मैं चाहती हूँ कि मैं मज़ीद आगे शोबिज़ में इन रहूँ ताकि मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी को प्रेजेंट कर सकूँ और उनके जो मसले मसाइल हैं वो लोगों तक पहुँचा सकूँ कि क्या मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी में हमें फ़ेस करने पड़ते हैं जो कि एक आम बंदा नहीं समझता या उसको नहीं पता चलता। काफ़ी ज़्यादातर काम तो होता है ट्रांस कम्युनिटी पे, पर उसमें ये होता है कि करैक्टर्स फेक होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरे जेंडर को प्रेजेंट कर सकते हैं या कोई औरत मेरे जेंडर को प्रेजेंट कर सकती है, क्योंकि मैं आपको नहीं कर सकती ना औरत को नहीं कर सकती। तो अगर मैं एज अ ट्रांस काम करूँगी तो मुझे लगता है कि मैं अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा करूँगी और उनके जेंडर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूँगी। जी, She does wish to continue acting, and because she wants more opportunities to be able to work more, not only for herself, because she likes the idea that she's able to represent her community in the industry that she's in. This particular industry, she's perhaps the main representative for Pakistan for her trans community. And the second बात क्या थी? कि यही कि क्योंकि हमारे जेंडर जो है ज़्यादातर फेक Right, and also particularly because she's special, she feels special and representative because she is a trans girl, and usually, not just in our part of the world but everywhere, they're not appropriately cast. Like men and women, just cisgendered men and women go ahead and play trans roles, and of course she feels that's not something that can ever be an accurate representation of any trans character, no matter what the character is like. So she hopes that she is sort of at the forefront of that movement for Pakistan as far as this industry is concerned. Well, I think you're a fantastic ambassador for your country, for your community, and the reaction yesterday was I think a little bit special. How did that make you feel? कल का रिएक्शन कैसा लग रहा था? हाँ. जी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने अपने आप को इतनी बड़ी स्क्रीन में देखा, इतने ज़्यादा सीनियर्स के साथ, और माशाल्लाह लोगों ने इतना पसंद किया मूवी को और इतना क्लैप किया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन चीज़ों से। जी, कि अपना जेंडर हम खुद ट्रांस कर रहे हैं, ना ही कि कोई फेक पर्सन, क्योंकि जिस तरह हम अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई सेकंड बंदा या उस तरह से बंदी। She was very excited to see herself on the big screen because she hasn't seen that before. In particular, to sort of see her as a part of a film which has so many other experienced and big actors involved in it, and she's there as well, which made her feel very represented as herself and also for the community, because and she's reiterating the fact that the whole thing about appropriate casting, that she does not feel that any actor, no matter how good they are, can ever be representative of a trans character in the way that an actual trans actor can be. Excellent. Well, thank you so much for joining us, taking the time to be with us and talk to us about those issues. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.
Well done, thank you both. Asian Culture Vulture is here at Cannes 2022. Follow us on social media and check in on the website too for the latest Cannes updates.